36 seats for total is 389 seats. इसको ही बोलेगा. Other 26 seats allotted to the British India and 296 members were to be drawn from the 11 governors' provinces and 4 from the 4 chief commissioner province, once from each. Muslim, Sikh and general necessary उसको क्या रखना. Table 14. The elections to the Constituent Assembly for 296 seats allotted to the British Indian provinces were held in July-August 1946. The Indian National Congress won 286. Indian National Congress won 208 seats. Indian National Congress won 208 seats. Indian National Congress won 208 seats. The Muslim League 73 seats, and small groups and independents got the remaining 15 seats. Indian National Congress won the 208 seats, and Muslim League won the 73 seats, and small groups and independents got the remaining 15 seats. However, the 93 seats allotted to the princely state were not filled as they decided to stay away from the Constituent Assembly. Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of other franchise, an assembly comprised representatives of all sections of the Indian society: Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians, Indian Christians, SC/STs, including women of all these sections. The assembly included all important personalities of India at that time, with the exception of Mahatma Gandhi. Wherefore, the Constituent Assembly held its first meeting on December 9, 1946. The Muslim League boycotted the meeting and insisted on a separate state of Pakistan. The meeting was thus attended by only 211 members. Dr. Sachindananda Sinha,
Sachindananda Sinha, the oldest member, was elected as the temporary president of assembly. Temporary president of the assembly. Dr. Sachindananda. Dr. Sachindananda. Dr. Sachindananda is the oldest member of the meeting and was elected the temporary president of the assembly. Following the French practice, later Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the assembly. After that, later Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the assembly. Similarly, both H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari was elected as the vice president of the assembly. H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. H.C. Mukherjee. मेरे को नाम याद नहीं रहता रे, लेकिन तकलीफ नाम याद करेंगे. H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. V.T. Krishnamachari were elected as the vice president of the assembly. Dr. Rajendra Prasad was elected as a president of assembly, and for vice principal, H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were selected as the vice president of assembly. Okay, let's see. The member is 1946. Jawaharlal Nehru moved the historic objective revision assembly. It's laid on the fundamental and philosophy of the constitution and structure in a read. The Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign. The Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for the future governance and constitution. Okay. Where the territories that now comprise British India, the territories that now form the Indian states and such other parts of India as are considered outside India and the states as well as other territories as are willing to constituted into the independent sovereign India shall be a union of them all, wherein the said territories, whether with their present boundaries or with such other as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution, shall possess and retain the status of autonomous units together with the legislative power and exercise all powers and functions of government and administration, save and except such powers and functions as are vested in or assigned to the Union or as are inherent or implied in the Union and the resulting therefore. ये रूम में इतना ज़्यादा आवाज़ आ रही है. सुबह को पहले तो कचरा वाला का कचरा ले लो, कचरा दे दो. नेक्स्ट ब्रेड चलेगा, अभी जिससे की चलेगा ब्रेड. और उसके बाद दूसरा स्कूल वे लोग टें करके डिस्टर्ब करेगा. और उसके तो फिर थोड़ा सा दिन हो जाने में सब्जी वाला सब्जी ले लो ऐसा. और उसके तो दिन में फिर से 12 और 1 बज जाने में फिर से स्कूल बस वाला टें करके. फिर उसके तो शाम हो जाने में फिर से सब्जी वाला आते, सब्जी ले लो. और दूध वाला आते, दूध ले लो. और उसके तो रात हो जाता है. और उसके तो शाम हो जाने में
स्ट्रीट डॉग लोग तो कितना चिल्लाते हैं, मतलब कितना बार्किंग करते हैं, कितना हम्म, उसको क्या बोलते हैं, कितना भौंकते हैं स्ट्रीट डॉग लोग, कितना ज़्यादा भौंकते हैं। उसके बाद फिर मेरे को नींद आ जाता है, उसके बाद मैं सो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, क्या क्या रेजोल्यूशन है कि इंडिया जो अभी से खुद से इंडिपेंडेंट है एंड खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फ्यूचर गवर्नमेंट एंड खुद का गवर्नमेंट बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वेर इन द टेरिटरीज दैट नाउ comprise British India, the territories that now form the Indian state and such other parts of India as are outside India and the states as well as other territories are as are willing to be constituted into the independent sovereign India shall be a union of them all, wherein the said territories, whether with their present boundaries or with such others as may be determined by the Constituent Assembly, and thereafter, according to the law of the Constitution, shall possess and retain the situation of autonomous unit together with the rest of the members of the powers and function of government and administrative except such power. इससे बेहतर कि आर्टिकल याद करेगा क्या, क्योंकि ये मेरे दिमाग में नहीं घुसा। चेंज बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, the representatives of the princely states who had stayed away from the Constituent Assembly gradually joined it on April 28, 1947. Representatives of the six states were part of the assembly after the acceptance of the Mountbatten Plan of June 3, 1947 for the partition of the country. The representatives of most of the other princely states took their seats in the assembly. The members of the Muslim League from the Indian Dominion also entered the assembly. The Indian Independence Act of 1947 made the following three changes in the position of the assembly. The assembly was made a fully sovereign body. The assembly was made a fully sovereign body which could frame any constitution it pleased. The assembly was made assembly को बनाया गया फुल्ली सॉवरेन बॉडी बनाई, जिस जो वो लोग को फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन जो वो लोग को बनाने का मन करेगा वो लोग वो बनाएगा. Act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to it. The assembly also became a legislative body. In other words, two separate functions were assigned to the assembly, that is, making of the constitution for free Indian enacting of ordinary laws for the country. These two tasks were to be performed on separate days. Thus, the assembly became the first parliament of Free India Dominion legislature. Whenever the assembly met as a constituent body, it was chaired by the Dr. Rajendra Prasad, and when it met as the legislative body, it was chaired by G.V. Maflankar. These two functions continue in November 26. It's all about money. Where is my the assembly also became legislative
legislative body. The other words, two separate functions were assigned to the assembly. Two separate functions were assigned to the assembly. That is making of the constitution for free India and enacting of orderly laws for the country. Okay, these two tasks were to be performed on separate days. So, the Muslim League members hailing from the areas including in the Pakistan withdrew from the Constituent Assembly for India. Consequently, the total strength of the assembly came down to 299 as against 389. Before it was 389, and when after partition of India and Pakistan, it became 299. 299. From 389, from 389 to 299, from 389 to 299. Assembly seats. Okay, assembly seats were 389, and after the partition of India and Pakistan, it became 299, and foreign British province was reduced from originally fixed in 1946 under the cabinet mission plan. The strength of the province Indian province was reduced from 296 to 299. From 296 to 229 to 296 to 229, and those of the princely state from before princely state got 93 seats, but after the partition it became 70 seats. The state-wise membership of the assembly as on December 31, 1947, it shows in table 2.4 of this chapter. Where is 2.4 of this chapter? Oh, here. 2.4. Where is table? There is no table. From 389 assembly seats to became 299, and from 296 to 229, and from princely states 93 seats to 70. Mountbatten plans there were 6 princely states. पढ़ा लिखा ये है नहीं. Other functions performed. In addition to the making of the constitution and enacting of ordinary laws, the Constituent Assembly also performed the following functions. It ratified the India's membership of the Commonwealth in May 1949. Ratified the Indians' membership of the Commonwealth in May 1949. It adopted the national flag on July 22, 1947. It adopted the national anthem on January 24, 1950. It adopted the national song on नेशनल फ्लैग को जो हम लोग का फ्लैग है इंडियन झंडा है 1947 को अडॉप्ट किया है एंड और उसके तो नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को 1950 को लिया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट elected Dr. Rajendra Prasad as the first
President of India on January 24, 1950. First President of India is Dr. Rajendra Prasad in January 24, 1950. January 24, 1950 में हमारा हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. 24 जनवरी 1950 में उसको इलेक्ट किया गया था, मतलब चुना गया था. Now the Constituent Assembly had 11 sections over 2 years, 11 months and 18 days. 11 sessions over 2 years, 11 months and 18 days. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years, 11th month and 18 days लगा. 2 years, 11th month and 18 days. 2 years, 11 months and 11 months and 18 days. The constitution maker had gone through the constitution of about 60 countries, and the draft constitution was considered for 114 days and total spent in 64 lakhs. उसको पूरा बनने में अमाउंट कितना लगा? 64 lakhs. On January 24, 1950, the Constituent Assembly held its final session. It, however, did not act and continue as the Provincial Parliament of India from January 26 to 1950. Still, formation of new parliament after the first election. Committees of the Constituent Assembly. मेजर कमेटी लोग कौन कौन था? यूनियन पावर्स कमेटी. इस कि रिमेंबर करना चाहिए. यूनियन पावर कमेटी was Jawaharlal Nehru. Union Constitution Committee was Jawaharlal Nehru again. Provincial Constitution Committee was Sardar Patel. Drafting Committee was Dr. B.R. Ambedkar. Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas, Sardar Patel. This committee had the following 5 committees: Fundamental Rights Subcommittee, J.B. Kripalani. Minorities Subcommittee was H.C. Mukherjee. Northeast Frontier Tribal Areas and Assam Excluded and Partially Excluded Areas Subcommittee, Gopinath Bardoloi. And excluded and partially excluded areas other than those in Assam Subcommittee, A.V. Sabji, A.V. Takkar. मेरा घड़ी कहाँ गई? Yes, my watch. Here. Okay, I started from here. 1, 2, 3, 4, 5. At least I had 4 hours. लाइट चला गया.
रूम में ऐसा जगह में रूम लिया है कि इधर साइड से भी बंद है, बंद इन द सेंस उधर साइड भी आदमी रहते हैं, हम उधर नहीं जा सकते, इधर भी आदमी रहते हैं, उधर साइड और इधर साइड भी। बस मेरा जो गेट है ना, उधर से मैं सिर्फ आ सकते और उधर से सिर्फ लाइट आ सकते हैं। अगर लाइट चला गया तो पूरा पूरा अंधेरा हो जाएगा। सीन हाँ, मेरा यहाँ का लाइट चला गया तो इसलिए को खिड़की खोलना पड़ा और मेरा सब जगह से बंद है, तो इसलिए दिखाई नहीं देता कि लाइट चले जाने से रूम पूरा अंधेरा हो जाते हैं। ओके, अभी वापस पढ़ते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। Among all the committees of the Constituent Assembly, the most important committee was the Drafting Committee set up on August 29, 1947. It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of a new constitution. It consisted of 7 members. Drafting committee दिखाई नहीं दे रहा उधर से। They are Dr. B.R. Ambedkar, Chairman, and N. Gopala Swamy, Ayan K. Ayangar, N. Gopala Swamy, Aladi Krishna Swamy, Dr. K. M. Munshi, Syed Muhammad Salula. The drafting committee took less than 6 months to prepare its draft. In all, it sat only for 141 days. Enhancement of the Constitution. Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft of the Constitution of the Assembly on November 4th, 1948. First reading. The Assembly had a general discussion on its 5 days till November 19. The second reading, clauses by clauses considering, started on November 15 and ended on October 17, 1949. पूरा एक साल वो ड्राफ्टिंग इसला को पढ़ने के लिए। This state as many as 7,653 amendments. इतना ज़्यादा ये कौन इतना ज़्यादा याद रख सकेंगे? 7,653 amendments were proposed and 2,473 were actually discussed in the assembly. पूरा में कितना अमेंडमेंट है? 7,653 अमेंडमेंट है, पर उसको एक्चुअली जो असेंबली में जो डिस्कस किया गया उसमें 2,473 डिस्कस किया गया. The third reading of the draft started on November 14, 1949. Dr. B.R. Ambedkar moved a motion. The Constitution as settled by the Assembly by be passed. The motion of draft Constitution was declared as passed on November 26, 1949. The received the signature of the member of the President. Out of a total 299 members of the Assembly, only 284
were actually present on that day and signed the constitution. This is also the date mentioned in the preamble as the date on which the people of India in the Constituent Assembly adopted an act and give to themselves this constitution. Preamble means give to ourselves as I. The constitution are adopted on November 29, 1949, contained a preamble, 395 articles and 8 schedules. 26 नवंबर में 1949 में जो हम लोग प्रियम्बल लिया है अडॉप्ट किया है उसको क्या बोलते हैं. उसमें 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल तो अभी है. पहले 8 शेड्यूल से 395 आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल थे. 395 articles, 395 articles and 8 schedules. 395 articles, 395 articles, 395 articles, 395 articles and 8 schedules. Constitution were contained a preamble was adopted on the Napo and contained a preamble, 395 articles and 8 schedules. Dr. Ambedkar, then law minister, piloted the draft constitution in the assembly. He took a very prominent part in the deliberation of the assembly. He was known for his logical, forceful, and persuasive arguments on the floor of the assembly. He is recognized as the father of the Constitution of India. Dr. B.R. Ambedkar considered the father of Constitution of recognized as the father of the Constitution of India. B.R. Ambedkar. Father of the Constitution of India. This brilliant writer, constitutional expert, and undisputed leader of the scheduled caste is also known as the chief architect of the Constitution enforcement of the Constitution. Some provisions of the Constitution pertaining to citizenship, elections, provincial parliament, temporary and transitional provincial, and short title contained in our some provision of the Constitution parliament pertaining to the citizens, elections, and provincial parliament, temporary and transitional provisions, and short title contained in 4, 5, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 397, 380, 388, 391, 392, and 393 came into force on November 26, 1949. Yes, of Article Enforcement Act came into force 1949 May itself. Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 and 92, 392 and 393.
came into force, it remaining provisions the major part as the constitution came into force on January 26, 1950. This day is referred to the constitution as the date of its commencement and celebrated as the Republic Day. It was on this day in 1930 that Purna Swaraj Day was celebrated following the resolution of the Lahore session. With the commencement of the Constitution, the Indian Independence Act of 1949 and the Government of India Act in 1935, with all enhancement, amending or supplementing the latter act, were repealed the abolition of Privy Council jurisdiction. Experts Committee of the Congress. The assembly were still in progress on the Congress Party. International Congress appointed as an experts committee for the purpose of the preparing materials for Constituent Assembly. This committee consists of the following members. आज कितना Wednesday? आज Thursday, कल Friday, परसों Saturday, Sunday. Saturday and Sunday को इधर रख दिखाएगा. क्या क्या क्रिटिसिज्म किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. वो लोग ऐसा क्रिटिसाइज किया कि ये जो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं. द क्रिटिक्स have argued that the Constitution Assembly was not a representative body as its members were not directly elected by the people of India on the basis of the universal adult franchise. वैसा बोलते हैं कि ये Constituent Assembly जो ना रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है क्योंकि इसका मेंबर को ना डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया है. किसके द्वारा? पीपल के द्वारा, मतलब इंसान के द्वारा उसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया है. इसीलिए बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज not the sovereign body. और ये sovereign body भी नहीं बोला. Critics maintain that the Constituent Assembly was not a sovereign body as it was created by the proposal of the British government. Further, they said that the Assembly held its sessions with the permission of the British government. Time consuming. और ये बोले कि ये बहुत time consuming. According to the critics, the Constituent Assembly took unduly long time to make the constitution. वो बोल रहा है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इतना सारा टाइम लेते हैं. टाइम लेके उसको हिंदी में क्या अंतर है? अननेसेसरी, बिना बे पता नहीं. लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसको इतना ज़्यादा समय लेके बना रहे. This stated that the framers of the American Constitution took only 4 months to complete their work. और ये कंपेयर कर रहे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में सिर्फ 4 महीने लगा, पर हमारा को कितना लगा? 2 years 11 months and 18 days लगा ना. तो ये बोल रही कितना नेसेसरी, इतना लंबा चौड़ा टाइम ले रहे. In this context, Najiruddin Ahmad, a member of the Constituent Assembly, coined a new name
for the drafting committee to show this contempt for it. He called a drafting committee dominated by Congress. Criticize करेगी इसको dominated करे Congress लोग से. Critics changed that the Constituent Assembly was dominated by the Congress Party. Granville Austin, an American Constitution expert, remarked the Constitution Assembly was on one party body is essentially one party country. The Assembly was the Congress and the Congress was India. Lower politician domination से dominated by Hindus. ये क्या क्या पहले कुछ है ये बोले कि ये जो रिप्रेजेंट नहीं करते नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ये जो एक नॉट ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है ऐसा बोले फर्स्ट और सेकंड जो नॉट सॉवरेन बॉडी ये जो बोले कि सॉवरेन बॉडी दूसरा नहीं और तीसरा बोले कि टाइम कंज्यूमिंग है और चार बोल रहे ये जो सिर्फ डोमिनेट करते कांग्रेस लोग मतलब उस समय को तो सिर्फ कांग्रेस लोग जो लीड किया था कि सब लोग कांग्रेस पार्टी से था नेहरू हो जितना भी गांधी है जितना भी वो लोग सब कांग्रेस पार्टी का था ना तो इसलिए ये बोलते कि वो लोग डोमिनेट बाई कांग्रेस पार्टी मतलब वो लोग उसको क्या आता है हिंदी से पता नहीं उसके तो फिर बोल रहे कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे कि लॉयर पॉलिटिकल डोमिनेंस है मतलब पहले तो देखो जो पढ़ा लिखा वही सिर्फ पढ़ा लिखा जो नहीं पढ़ा लिखा वो नहीं पढ़ा लिखा मतलब जो फार्मर है बाकी लोग है वो लोग नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली जो जिसके पास पावर है जो पढ़ा लिखा है वही तो लीड करेगा कंट्री को तो उस समय को तो कौन लोग पढ़ा था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर पाटेल ये लोग सभी सिर्फ पढ़ा ना तो वो लोग सब बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन बन गया बड़ा बड़ा लॉयर बन गया गांधी जी भी तो बड़ा सा एक लॉयर था तो इसीलिए क्या बेच रहे पता है इस पलंग पे टिक करा लो बोले और इसके बाद तो जो पॉलिटिशियंस लोग हैं जो लॉयर्स लोग हैं वो लोग डोमिनेट कर रहे पूरा कंट्री को ऐसा बोल के क्रिटिसाइज किया डोमिनेट बाय हिंदू इंडिया हम लोग का इंडिया क्या है हम लोग का इंडिया मेजॉरिटी हिंदू है ना तो मतलब बुद्धिस्ट बहुत कम है और क्या होता सिख लोग बहुत कम है और मुस्लिम कम है ऐसा तो सबसे ज़्यादा कौन है हिंदू है तो ये बोल रहे कि हिंदू लोग डोमिनेट कर रहा है पूरा इंडिया ऐसा ये क्रिटिसाइज था क्रिटिसाइज किया गया था हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो ड्राफ्ट जो बना था उसको बोलने पलंग पे टिक करा लो important facts जो क्या है airplane was adopted as the symbol of the Constituent Assembly. Okay, Sir B.N. Rao was appointed as the Constitution advisor, legal advisor of the Constituent Assembly. Okay. B.N. Rao को लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी के लिए लीगली एडवाइजर मतलब लीगली मीन्स मतलब पूरा प्रॉपर से लीगली हिंदी में क्या बोले पता नहीं हमको हिंदी का इतना सारा वर्ड्स नहीं आते जो मेन वाला टर्म्स बोले ना वो वाला मतलब लीगली मतलब जो पूरा कागजात के साथ लीगली उसको अपॉइंट किया गया है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें एडवाइजरी बनेगा और वो जो एडवाइस उसको एडॉप्ट किया गया है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और उसका तो HBR अयंगर
H.V.R. Iyengar was the secretary to the Constituent Assembly. H.V.R. Iyer जो secretary था, secretary to the Constituent Assembly, secretary to the Constituent Assembly, secretary to the Constituent Assembly. I bet the break लेंगे क्या? इसको पढ़ने के बाद ब्रेक लेंगे क्योंकि एक आदमी को, एक इंसान को 45 मिनट्स तक कंसंट्रेट करना है और 45 मिनट्स के बाद शॉर्ट ब्रेक लेना, फिर बैठना, शॉर्ट ब्रेक लेना, फिर बैठना, पर 45 मिनट्स. सो अभी 1 आवर होने वाला है, तो मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे इसको पढ़ने के बाद. Sir B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor, and H.V.R. Iyengar was the secretary to the Constituent Assembly. H.V.R. Iyengar was the secretary to the Constituent Assembly. H.V.R. Iyengar was the secretary to the Constituent Assembly. सबसे पहले हम लोग ऐसा सिंबल किसको हम लोग एडप्ट किया, एलिफेंट को. कहाँ में कंस्टिट्यूएंट असेंबली को, उसमें सिंबल के लिए एलिफेंट को, उसमें वो जो सील होते हैं ना, उसमें हम लोग एलिफेंट का सिंबल को एडप्ट किया है. और इसके तो B.N. राव को अपॉइंट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी के लिए लीगली उसको अपॉइंट किया गया है. H.V.R. को सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सेक्रेटरी बनाया उसको H.V.R. राव को. और उसके तो S.N. Mukherjee was the chief draftsman of the constitution in the Constituent Assembly. S.N. Mukherjee was the chief draftsman of the Constitution in the Constituent Assembly. ड्राफ्टमैन के लिए लिया गया है कि किसको, S.N. मुखर्जी को. S.N. मुखर्जी उसको चीफ ड्राफ्टमैन के लिए अपॉइंट किया. प्रेम बिहारी नारायण Raijada was the calligrapher of the Indian Constitution. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इतना लंबा नाम है क्या? 4. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. Prem Bihari Narayan Raijada was the calligrapher of the Indian Constitution. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. मेरे को 2 आदमी का नाम लेंगे. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को कैलीग्राफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कैलीग्राफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Okay. The original version was beautified and decorated by artists from Santiniketan, including Nandlal Bose and Bihar Ram Manohar Sinha. Illuminated, beautiful and ornamented the original preamble calligraphed by Prem Bihari
ऐसा 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 सजा के लिखते ना, उसको कैलीग्राफर बोलते ना। उसको ऐसा 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 सजा के लिखने वाला प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा ना, इसको उसने उसको ऐसा लिखने के लिए दिया है और उसने ऐसा लिखा है ना। द कैलीग्राफी ऑफ द इन हिंदी version of the original constitution was done by Vasant Krishan Vaidya and elegantly decorated and illuminated by Nand Lal Bal। और हिंदी वाला को लिखने के लिए वसंत कृष्ण हिंदी में क्या होता है पता नहीं। वसंत कृष्ण वैद्या, वसंत कृष्ण वैद्या, वसंत कृष्ण विद्या, हिंदी वाला को वसंत कृष्ण विद्या को दिया, वसंत कृष्ण विद्या, वसंत कृष्ण विद्या, वसंत कृष्ण KRISHAN कृष्ण विद्या VAIDA विद्या, वेदा वसंत कृष्ण वेदा। ये डेकोरेट किया एंड इल्यूमिनेटेड बाय नानलाल बोस। इट्स ब्रेक टाइम। मेरे पास दिक्कत है उठने के लिए भी बैठने के लिए। दिखाई नहीं दे रहे ना।
इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लोग था कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एलिफेंट का सिंबल को ऐसा सील लिया था और उसके तो बी एन राव को अपॉइंट किया था ड्राफ्टिंग कम ऐसा था क्या adopted as the constitution और एडवाइजरी के लिए। मेरा दिमाग इतना कमजोर है कि अब भी पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। अपॉइंट किया था एडवाइजरी के लिए और उसके तो HVR अयंगर को सेक्रेटरी और उसके तो SN मुखर्जी को चीफ ड्राफ्टिंग और प्रेम बिहार नारायण को कैलीग्राफी के लिए जो हम लोग का प्रियम्बल है ना उसका जो ऐसा सुंदर हैंड राइटिंग से जो लिखा है उसका सिलेक्ट। और हमको मैं एक वीडियो में ये भी दिखा था कि उसमें उसने अपना सिग्नेचर दिया है बोला था, उसका जो नीचे में जो साइन है ना वो जो इसका है ऐसा बोला था। मैं एक वीडियो में ऐसा सुना तो उसमें उसका एक सिग्नेचर है बोला था क्योंकि वो कैलीग्राफी उसने किया ना तो उसके लिए। और हिंदी वाला के लिए उसको चुना गया था, क्या था, कृष्णा वैद्या एंड एलिगेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय लिखने हिंदी का जो लिखने के लिए उसको कृष्णा वैद्या को चुना गया है। ये कैलीग्राफी वाला तो इंग्लिश वाला है ना और हिंदी के लिए तो कृष्णा वैद्या को चुना गया है। और उसके तो और उसको फिर डेकोरेट करने के लिए मतलब डेकोरेट इन द सेंस वो जो सजाने के लिए उसको नंद लाल बोस को लिया गया है। ये हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया था और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया did not make any provision with respect to an authoritative text of the constitution in the Hindi language. Later, a provision in this regard was made by the 58th Constitutional Amendment Act of 1987. This amendment inserted an Article 394A in the last part of the Constitution, that is part कितना ये जो 22 part 22. This article contained the following provision: the president shall cause to be published under his authority the translation of the constitution in Hindi language, the modification which are necessary to bring। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इंडियन लैंग्वेज में लिखने के लिए ना इसमें एक अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है। वो जो 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 1987 में बना। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश में लिखा उसको हिंदी में लिखने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। उसको 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 58 खुद ही भूल जाएगा। हम किसी को नहीं पढ़ा रहे, मैं खुद को पढ़ा रहे। 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है इन 1987। 58 Constitutional Amendment Act of 1987. This amendment inserted an article। और ये amendment act जो एक आर्टिकल इंसर्ट करते मतलब एक आर्टिकल घुसाते, इंसर्ट मतलब हिंदी में घुसाते ना, घुसाते है आर्टिकल 394A। आर्टिकल 394A जो है पार्ट 22 का अंदर में। मेरा कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इतना दूर में दिखा नहीं दे रहा उत्तर में। आर्टिकल कितना था? 394 394A सॉरी A 394A।
394A। इसमें 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 था क्या? दिमाग काम नहीं करते। 1987 58 Constitutional Amendment Act of 1987 insert an article and insert a new article. Okay, article 3 कौन सा था? 394A Pari Sirap 394A in the last part of the 22 Constitution part 22 में ऐसा लगे दिस आर्टिकल कंटेन द, वो आर्टिकल क्या क्या कंटेन करता है वो नीचे दिया गया है ऐसे बोल, क्योंकि इसको ऐसा द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज द मॉडिफिकेशन सच necessary to bring it in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative text of the Central Act in Hindi can be made in it. All the amendments of the Constitution made before such publication should be incorporated in it. The translation in Hindi of every amendment of the Constitution made in English. The translation of the Constitution and its every amendment published shall be constructed to have the same meaning and the original text in English. If any difficulty arises in this matter, the President shall cause the Hindi text to be revised suitably. The translation of the Constitution and its every amendment published shall be deemed to be, for all purposes, its authoritative text in Hindi. पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश में था उसको हिंदी में लाने के लिए 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 तो है ना, हाँ 1987 में के द्वारा न्यू आर्टिकल डाला गया है। उसमें 394 आर्टिकल 394A को डाला गया है। ये जो कौन सा पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 22 में है। और इसमें क्या बोला है कि जो इंग्लिश में है उसको एज दिस इंग्लिश में उसका सेम मीनिंग ये सब होना चाहिए ऐसा बोला, क्योंकि नहीं तो हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग मीनिंग है, हिंदी में अलग मीनिंग है, तो उन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो कन्फ्लिक्ट होने से अच्छा नहीं था। इसलिए इसको ऐसा एज इट इज, जो इंग्लिश का जो मीनिंग है एज इट इज हिंदी का भी वही मीनिंग होना है ऐसे बोले। कुछ समझ में आया कि मेरे को? हाँ, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब ये साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है? Silent features of the Constitution क्या है? The Indian Constitution is unique in its content. ऐसा बैठेंगे ना? Its content and spirit. True borrowed from almost every constitution of world, the Constitution of India has several silent features that distinguish it from the Constitution of the other countries. It should be noted at the outset that a number of original features of the Constitution adopted in 1949 have undergone a substantial change on the account of several amendments, particularly 742, 44, 73, 74, 79, 97, 101 amendments. In fact, the 42 Amendment Act 1976 is known as mini-constitutional due to the importance of large number of changes made by its various parts of the Constitution. However, in the Kesavananda Bharati case, the Supreme Court ruled that the constitutional power of the Parliament under Article 368
does not enable it to alter the basic structure of the constitution. हम लोग को पता है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी हम लोग का इतना सारा रूल्स है, इतना सारा एक्ट लोग है ना, वो सब का हम लोग बोरोड क्या है मोर देन 60 कंट्रीज से. तो it should be noted that the outside of the original feature of the में have undergone some change. उसका अंदर पर हम लोग बोरोड करने के बाद भी उसमें कुछ हम लोग चेंज करते रहते ऑन अकाउंट ऑफ सेवरल अमेंडमेंट्स. पर्टिकुलरली कौन सा इस्लाम में चेंज किया? 7 में, 42 में, 44, 73, 74, 97, 104 अमेंडमेंट्स लोग में. इनफैक्ट ये जो 42 अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, इसको उल्टा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. क्यों? ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस, क्योंकि उसमें 10 ज़्यादा चेंजेस हुए मेड बाई वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द के पर ये जो केशवानंदा भारतीय केस, the Supreme Court ruled that the constitution power of the Parliament under Article 368 does not allow it to alter the basic structure of the Constitution. केशवानंदा केस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट जो अलाउ नहीं करता है अंडर आर्टिकल 369 के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेगी. साइलेंट फीचर ऑफ द हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है, हम दूसरा को क्या समझा देंगे. और वैसे भी मैं दूसरा को किसी को कुछ नहीं समझा रहा, मैं खुद को समझा रहा. देखो the silent features of the constitution and its stains today are as follows. Lengthiest written constitution. वो तो सबको पता है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा तक भी नहीं, पर एटलीस्ट हम लोग का रिटन है और सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग का. कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लैरिफाइड इनटू रिटन लाइक द अमेरिकन, कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन लाइक द ब्रिटिश. अमेरिका का तो रिटन है, पर ब्रिटिश का रिटन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेंथियस्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. पूरा दुनिया का जिसका रिटन भी है, नॉन रिटन भी है, उसमें से भी सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे लंबा ऐसा बोल देंगे, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का है. वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एलाबोरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट है. Originally, 1949, the Constitution contained the preamble, 395 articles divided into 22 parts. Constitution contained a preamble. उसमें 395 आर्टिकल्स को डिवाइड किया है. 395 आर्टिकल्स है और 22 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है. एंड उसमें 8 शेड्यूल्स है. Presently, in 2019, it consists of the preamble about 470 articles. अभी 2019 से अभी तो क्या 2026, 2019 से लेकर 470 आर्टिकल्स है. 470 आर्टिकल्स. इतना ज़्यादा नंबर याद नहीं रख सकते हैं मैं. 470 आर्टिकल्स और 25 पार्ट्स है. 25 parts. 25 parts. 470 articles है and 25 parts and 12 schedules and 12 schedules and 12 schedules for 470.
My brain is no more braining. 470 articles, 22 parts. Not 22. Now it's became 25 parts and 12 schedules. SHED. 12 schedules. Okay. 470 articles. In our constitution, we have 470 articles, 25 parts, and 12 schedules. These various amendments carried out since 1951 have deleted about 20 articles and one part 5, 6, part 7 and added about 95 articles. आर्टिकल 20 about 20 आर्टिकल्स को डिलीट कर दिया और पार्ट 7 को और उसके बाद एंड एडिट किया अबाउट 95 आर्टिकल्स 4 पार्ट्स. ये क्या है? किसको डिलीट किया है? 5, 6, 7 को डिलीट किया है और 4A डाला गया है, 9A डाला गया है, 9B डाला गया है एंड 4A डाला गया and 4 schedules 9, 10, 11 and 12. No other constitution in the world has so many articles and schedules. पूरा दुनिया में इतना सारा आर्टिकल्स और शेड्यूल्स नहीं है, सिर्फ इंडिया में है. 4 factors have contributed to the elephantiasis of our constitution. हम लोग का 4 ऐसा फैक्टर्स है जो बोलता है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत बड़ा है इसलिए इसको एलिफेंट जो सबसे बड़ा है ना एनिमल में से, तो उसका इसलिए दिया एलिफेंट साइज मतलब इतना बड़ा साइज है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसका 4 एलिमेंट्स से रोल है और वो 4 एलिमेंट्स है जोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इज द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी. सबसे पहले तो जोग्राफिकल फैक्टर्स है जो है जोग्राफिकल फैक्टर्स जो बहुत वास्ट है मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा और उसका डाइवर्सिटी देखो. सिंस हम नॉर्थ ईस्ट से है तो इवन हम नॉर्थ ईस्ट में भी 7 सिस्टर्स का अंदर में भी इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है. मतलब हम लोग का खाने पीने का सबका सेम है पर हर भाषा हर एक एरिया का भाषा अलग है. इवन मेरा अपना पास का विलेज का भाषा भी मैं नहीं समझ सकते, इतना ज़्यादा डिफरेंस है. खाने का इवन रिचुअल्स का फेस्टिवल्स का भी अलग अलग है, ड्रेस का तो पूरा टोटली अलग है. ऐसा तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर में इतना ज़्यादा है तो सोचो कि मेन लैंड तो कितना बड़ा है. राजस्थान, गुजरात, केरला, MP, इतना सारा तो हम लोग का जोग्राफिकल एरिया इतना वास्ट है. इसीलिए हिस्टोरिकल फैक्टर्स influence of the government of India Act of 1999 which was bulky. हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे इतना ज़्यादा हम लोग का उधर से आहोम का इधर में क्या होता है ऊपर साइड में उसका क्या होता है याद नहीं आ रहा कुछ भी. हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे इतना ज़्यादा है ना. और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स और दूसरा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है बोथ सेंटर एंड स्टेट्स के लिए. और उसके तो डोमिनेंस ऑफ लीगल luminaries in the constituent assembly है. डोमिनेंस ऑफ लीगल luminaries in the सिंगल constituent assembly है. दिमाग दर्द है. The Constitution contains not only the fundamental principles of governance but also detailed administrative provisions. Further, those matters which in other modern democratic countries have been left to ordinary legislation or establishment political governments have also been included in the पहले तो जोग्राफिकल है और दूसरा हिस्टोरिकल है और तीसरा जो
क्या स्टेट और इस्ला के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट और सेंटर के लिए सिंगल है। और उसके तो डोमिनेंट है लीगल लुमिनरीज का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, बस ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अभी वेरियस सोर्सेस देखिए कौन सा जगह से क्या क्या हमने लेके आए। इसको मैं कहाँ लिखा था, दिस इज माय नोटबुक जिसमें मैं ब्रेक इतना बड़ा से लिख के रखा हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 क्या क्या लिख रखा हमको खुद को नहीं पता। अरे ये लाइट भी कब आएगा, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। ब्रिटिश से हमने क्या लिया, ब्रिटिश से लिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हम लोग ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम। 1 2 3 4 1 2 3 4 ब्रिटिश से हम लोग लिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सॉरी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप एंड कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम भूल जाएगा फिर भी मैं इसको। देखो फिर से एक पढ़ेगा, इसको मैं पढ़ेगा बाय हार्ट कर लेगा, मेरे को बाय हार्ट हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट पढ़ेगा मेरे को बाय हार्ट हो जाएगा। मैं थर्ड पढ़ेगा, फिर मैं ऊपर का 2 भूल जाएगा। फिर मैं थर्ड वाला याद करेगा मेरे को पूरा बाय हार्ट हो जाएगा। मैं फोर्थ वाला पढ़ेगा, फिर ऊपर का 3 और भूल जाएगा। इसलिए मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता कि मैं इतना पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। ब्रिटिश सामने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप एंड कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम भी हमने ब्रिटिश से ही लिया। कैबिनेट सिस्टम क्या क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम, ये 4 है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ और उसके बाद क्या था, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, ये 4 ब्रिटिश से लिया है। कैबिनेट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप और एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, ये 4 जो ब्रिटिश से लिया। और उसके बाद यूएसए से लिया है फंडामेंटल राइट्स 1, जुडिशियल रिव्यू 2, प्रेसिडेंट इम्प्लीमेंट 3, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज सॉरी। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट इसमें इतना सारा क्या, यूएसए सामने लिया फंडामेंटल राइट्स, रुको ब्रिटिश और भी ले रिकॉग्निटिव राइट्स क्या है ये, इसको वापस देखना पड़ेगा। मैं खुद लिखा और मेरे को खुद का हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग बहुत छोटा है।
my handwriting is very small. You can see. Can you see? बाइकैमेरियलिज्म जो भी ब्रिटिश से लिया है. बाइकैमेरियलिज्म फर्स्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम, और सेकंड जो है सेकंड क्या था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, क्या रूल ऑफ एक्ट, नहीं रूल ऑफ लॉ, और फोर्थ नंबर क्या था रूल ऑफ लॉ के बाद, भूल गया. रूल ऑफ लॉ के बाद कैबिनेट सिस्टम और बाइकैमेरियलिज्म. एक और है पर उसका है मैं अभी अपना हैंड राइटिंग ही नहीं प्रेजेंट, इसलिए प्री है प्री कॉग्निटिव राइट है क्या? प्री कॉग्निटिव राइट्स ऐसा मेरे को समझ में आ रहे, पर वो है कि नहीं मैं कंफर्म नहीं कर सकता. सबसे 5 अभी के लिए 5 एटलीस्ट उधर से 6 लिया है. पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप्स, रूल ऑफ लॉ, और उसके बाद तो कैबिनेट सिस्टम, और लास्ट जो बाइकैमेरियलिज्म, ये 5, और एक जो कॉग्निटिव प्री कॉग्निटिव राइट्स ऐसा है. पर वो कितना करेक्ट है मेरे को नहीं पता, उसको मेरे को बाद में गूगल करना पड़ेगा. सिंस हम मेरे पास एक ही मोबाइल है तो मैं 2 काम नहीं कर सकता है. वीडियो बनाते तो मैं मोबाइल से नहीं पढ़ सकता, मैं मोबाइल से पढ़ते तो वीडियो नहीं बना सकता. और यूएसए से लिया है फंडामेंटल राइट्स. यूएसए फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू. president impeachment, USA president impeachment, removal of Supreme Court and High Court judge. पर आज तक इंडिया में मैं कभी नहीं सुना कि हमने सुप्रीम कोर्ट और क्या हाई कोर्ट का जज को रिमूव किया है बोल के. आज तक इवन मतलब पहले भी ऐसा हुआ है बोल के भी पे नहीं सुना. फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, और रिमूवल ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जज, और उसके तो लास्ट एक और होगा वाइस प्रेसिडेंट. Let me make vice president. First, fundamental rights. Second is fundamental rights. President impeachment. Judicial review. Fundamental rights, judicial review, president impeachment, removal of Supreme and High Court judge, और उसके बाद एक और था भूल गया. वाइस प्रेसिडेंट एंड जुडिशियल रिव्यू. वाइस प्रेसिडेंट एंड जुडिशियल रिव्यू गला हो गया. वाइस प्रेसिडेंट एंड जुडिशियल
वाइस प्रेसिडेंट एंड जुडिशियल रिव्यू। यूएसए से लिया गया है, यूएसए फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट ऑफ द जज। ये 5। फर्स्ट का कौन सा था? ब्रिटिश से क्या क्या लिया था हमने? ब्रिटिश से लिया था, भूल गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, और उसके तो बाइकैमरलिज्म। और यूएसए से लिया है फंडामेंटल राइट्स, वाइस प्रेसिडेंट, जो क्या था, जुडिशियल रिव्यू और रिमूवल ऑफ हाई एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज। उसके ऊपर ये लास्ट क्या था? प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट को कैसे भूल गए? प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना। आइरिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। आइरिस से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। आइरिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 1, members nomination to Rajya Sabha, member nomination to Rajya Sabha, आइरिस से लिया, member nomination to Rajya Sabha, member nomination to Rajya Sabha। member nomination to Rajya Sabha, member nomination to Rajya Sabha, member nomination to Rajya Sabha, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, member to Rajya Sabha। ये 2 लिया गया, आइरिस से 2 है ना, आइरिस से 2 लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड member nominated to Rajya Sabha, member nominated to Rajya Sabha। Okay, राज्य सभा। आइरिस से 2 स्टेप लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेंबर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। और ब्रिटिश से लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, और क्या था, सिंगल सिटीजनशिप, और उसके तो कैबिनेट मिशन, और उसके तो प्री कॉग्निटिव राइट्स, और उसके तो बाइकैमरलिज्म, ये जो यूएसए से लिया, और उसके बाद तो सॉरी ये ब्रिटिश से ले लिया, और ये यूएसए वाला फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद तो जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, उसके बाद क्या था प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के बाद, रिमूवल ऑफ जज सुप्रीम और हाई कोर्ट का, और 5 था ना, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, और याद नहीं आ रहा। ओह, वाइस प्रेसिडेंट को क्यों बोलते रहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट
vice president, vice president, vice president, vice president, vice president. और आयरिस से सिर्फ दो लिया है, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, मेंबर ऑफ क्या था, मेंबर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। और इसके तो कनाडा से फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। कनाडा कनाडा कनाडा, इसमें कनाडा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा 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 कनाडा, चाइना इधर से लो, कनाडा कनाडा, कनाडा। फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, 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 फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, और इस स्टेट को तरह तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है। ट्यों 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 ट्यों, ये लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो, ऐसा फेडरेशन। ये चीज़ जो हम लोग सेंटर में ज़्यादा पावर रखने के लिए, ये चीज़ कहाँ से हम लोग लिया है, कनाडा से। कनाडा फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। मेरे को काशी आने वाला है क्या, गला। कनाडा से लिया फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ओके, और इसके तो रेसिड्यूरी पावर विद द सेंटर, रेसिड्यूरी पावर विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, residuary power with the center, advisory jurisdiction of the Supreme Court, advisory jurisdiction of the Supreme Court, advisory of the jurisdiction of the Supreme Court, advisory of the jurisdiction of the Supreme residuary power of the center, residuary power of the center, residuary power of the center, residuary power of the center,
सादा सा में लगा क्वेश्चन जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूएसएसआर से फंडामेंटल यूएसएसआर फ्रॉम यूएसएसआर से यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटीज द आइडिया ऑफ justice ideas of justice idea of इसको भी मैं what is my diary I'll write here जो चीज़ को मैं बैठ के नहीं पढ़ सकते उसको मैं चल चल के पढ़ेंगे just don't give up मेरा अभी आर जो है ऐसा हो गया
Procedure for amendment of the Constitution, election of members of Rajya Sabha. Japan. Procedure established by law. Article 368 provides for two types of amendment. Some provisions can be amended by a special majority of the parliament, that is, a two-third majority of the member of each house present and voting, and a majority of the total member of each house. Some other provisions can be amended by special majority of the parliament and with a ratification by half of the total staffs. Can you see my handwriting? So small, so small. It's time to take a break.
अभी ये मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा, इसलिए मैं इसको वापस पढ़ने मन नहीं हो रहा है। कोई नहीं, जो जिसने घुसते उसको बाद में के लिए रखते हैं, फिर बाद में आके इसको पढ़ेंगे, है। तो आगे में पढ़ेंगे दूसरा, फीचर्स ऑफ parliamentary government in India are present of nominal and real executive. फंडामेंटल ड्यूटीज जो USSR से लिया है। इतना ज़्यादा कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये एक्ट वो एक्ट, और ये मेरे को कर रहे दिमाग गरम। इसको पढ़े। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in a Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, justice, social, economic, and political, liberty of thought, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, justice, social, economic, and political, justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote them all. Equality of status and of opportunity, and to promote them. Equality of status and of opportunity, and to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of the individual. Fraternity, assuring the dignity of the individual. Fraternity, assuring the dignity of the individual. Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of in our Constituent Assembly, this 26th day of November, 1949, do hereby adopt, enact, and to give ourselves to this Constitution. Okay. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political. Justice, social, economic, and political. Justice, social, economic, and political. Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. भूल गया. Faith and worship. Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Equality of status and of opportunity, and to promote among them all.
Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the unity and integrity of the nation. In a Constituent Assembly, in this in a Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we not we do hereby adopt an act. Do hereby 1949. Do hereby adopt an act and to give ourselves this constitution. Okay. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality, equality of status and of opportunity, and to promote them all, promote among them all, huh? and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act to give ourselves to this constitution. Okay, listen. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, fraternity, not fraternity, among them all, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and to give ourselves this constitution. Yay! We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all. है भूल गया the people of India having sovereign, socialist, secular, democratic, and republic, security, all this justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, जितना बोलेगा इतना भूल जाते हैं. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and promote among them all liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. खिचड़ी बना दे खिचड़ी. Oh, by the way, light नहीं कहा सुने. Listen. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens
justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, 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 equality of status. Worship के बाद equality. We the people of India, we the people of India, just we the people of India, we the people of India, we the people of India. Yes, we are the people of India. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Yes, 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 yes. Yay! Boom, फिर से भूल जाएंगे. ट्यूं, 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 ट्यूं. Purtung, purtung hada, purtung hat. Pyung, pyung hada, pyung, pyung hat. Do hereby adopt, enact and give to us. Give. मैं क्या बोला? To give ourselves. No. Give to ourselves this constitution. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Give to ourselves. Yes. Ingredient of the preamble. Ingredients. What ingredients? मतलब अभी हिंदी में ingredients को क्या बोलते हैं? सब्जी में जो जो चीज़ सामान बनने के लिए डालते हैं उसको इंग्रेडिएंट बोलते हैं. नॉट ओनली इन सब्जी पर जो चीज़ उसमें डाल रहे हैं, जैसे प्रियम्बल में क्या क्या उसको बनाने में क्या क्या डाला गया है वो समझ. Source of authority of the Constitution. The preamble states that the Constitution derives its authority from the people of India. Yes. Derived its authority from the people of India. Authority को क्या बोलते हैं हिंदी से? पता नहीं, छोड़ो. Nature of state, Indian state. It declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic and republican polity. Objectives of Constitution. It is special justice, liberty, equality and fraternity. इसको objectives of the Constitution क्या है? Justice, liberty, equality and fraternity, and it's as the objectives. Liberty, equality and fraternity. Date and 26 November of 1949. ये तो अभी हम इसमें ही पढ़े ना.
sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, equality, fraternity, और ये सबको इसमें एक्सप्लेन किया गया. सोवरेन क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट. देयर इज नो अथॉरिटी above it. The word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any. चेन लगवा लो बैग में, लॉन्ग पेन में, और क्या बोलते हैं, और जैकेट में चेन लगवा लो. इसका सोवरेन मतलब क्या है? सोवरेन, नॉर इंडिया इज डिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन. मतलब इंडिया एक किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है और डोमिनियन भी नहीं. मतलब इंडिया को कोई ऐसा रूल करके भी नहीं देता और ये इसको ऐसा, उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट उसके सहायता में ऐसा बोलते क्या? हाँ चलो, उसके पास डिपेंडेंट भी नहीं आया, उसके पास डिपेंडेंट भी नहीं है और वो उसको ऐसा रूल भी नहीं करके रखा. ओके, द वर्ड sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nations, but an independent state. There is no authority above it, and it is free to conduct its own fair, both international. और ये जो ना, कोई बड़ा पावर, ऑथोरिटी मतलब कोई बड़ा पावर भी नहीं जो इसको कंट्रोल करके रखेगा कि हमको, जैसे कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है तो मैं जाएंगे कनाडा और यूएसए में ट्रेड करने के लिए, मतलब मेरा सामान को उधर बेचने के लिए, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री है, यू कैन ट्रेड विद अदर कंट्री. This is the meaning of sovereign. Okay. And through in 1949, India declared the constitution of her full membership of the Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth. This extra constitutional declaration does not affect. आगे कपड़ा सुखा के रखा था. 1 minute. I just need 1 minute to put back my clothes. मेरा यूनिफॉर्म बाहर में था. Socialist. Even before the term was added by the 42nd Amendment in 1796, the Constitution had a socialist content in the form of certain directive principles of state policy. Socialists. Before the term added 42nd Amendment of 1976, the Constitution had a socialist content in the form of certain directive principles of state policy. In other words, what was hitherto implicit in the Constitution has now been made explicit. Moreover, the Congress Party itself adopted a resolution to establish a socialistic patterns of society in its Avadi session as early as in 1929 and took measurement accordingly. Notably, the Indian 12.
3 hours. Okay. Even before the term was पहले socialist means the first amendment in 1976. The constitution had a socialist content. Principle of state policy. In other words, what was hitherto implies in the constitution has now hitherto. Let me write the words, and after this, I'll switch the words meaning. In other words, what was hitherto implies in the constitution has now been made explicit. Moreover, the Congress Party itself adopted a resolution stabilize a socialistic pattern of society in its Avadi session as early as and took measures accordingly. Notably, the Indian brand of socialism is a democratic socialism and not a communistic socialism, also known as state socialism, which involves the nationalism of all means of production and distribution and the abolition of private property. Democratic socialism, on the other hand, holds faith in a mixed economy where both public and private sectors coexist side by side, as the Supreme Court says. Democratic socialism aims to end poverty, ignorance, diseases, and inequality of opportunity. Indian socialism is a blend of Marxism and Gandhism, leaning heavily towards the Gandhian socialism. The new economic policy of liberalization, privatization, and globalization has, however, diluted the socialist credential of the Indian state. एक बात बताएंगे, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया. ये कनेक्ट नहीं हो जाएगा. I'm a true Indian. देखो तोरा देखो मैं तोरा चाइनीज जैसा दिखता हूँ, अंदर से हूँ इंडियन. आया दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा. Secular. The term secular too was added by the 42nd Constituent Amendment Act of 1970. Secular added by the 42nd Constitution Amendment Act of 1976. However, as the Supreme Court said in 1974, लाइसाइट क्या है, इधर क्या लिख के रखा है, separate church and state. Secularism upholds the coexistence of different religions, inclusion, religion, balance. Although the words secular state were not expressed
clearly mentioned in the Constitution, there can be no doubt that constitution makers wanted to establish such a state, and accordingly Article 25 to 29, guaranteeing the fundamental right to freedom of religion, have been included in the Constitution. The Indian Constitution embodies the positive concept of secularism, that is, all religions in our country, irrespective of their strength, have the same status and support from the state. Secular rights को 42nd Constitutional Amendment Act of 1974 में ऐड किया गया. The eighth, where Supreme Court said, it's a Supreme the word secular were not. Supreme Court और ये भी बोलते हैं all the कुछ भी नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को मेंशन नहीं किया गया है. पर भी अकॉर्डिंग टू wanted to establish such a state, and accordingly Article 25 to 28 guaranteeing the fundamental right to freedom of religion. Article 25 और 28 जो हम लोग को परमिशन देता है फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम टू रिलीजन का, और religion going country irrespective their strength and same status and support for their states. Democratic it was added in the amendment 42nd amendment 42nd amendment act of 1976, and although it is not mentioned clearly in the constitution, but the maker to establish such a state, and accordingly Articles 25 and 25 to 28, guaranteeing the fundamental rights to right to religion, and all the religions going our country affairs and all this are allowed. We can do all these things. Democratic, great people rule. The democratic public as stipulated in the preamble based on the doctrine of popular sovereignty, that is possession of supreme power by the people. Democratic polity as stipulated. आज लाइट को क्या हो गया? सुबह से लाइट नहीं है. आज है क्या? 26 से tomorrow is Friday. Democratic polity as stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty, that is possession of supreme power. मैं ना ये सोच सब लोग ऐसे पढ़ते हैं क्या इतना बिना बिना डिस्ट्रैक्शन का, मतलब नॉन स्टॉप फॉर एटलीस्ट 5-6 hours लाइक दिस. मैं तो क्या करते, तोरे पढ़ते हैं, फिर तोरा गाना गाते हैं, फिर तोरा सोचते हैं, थोड़ा सा क्या मेरा ये रोड का जो साउंड है ना,
Okay. Imperialism is based on the doctrine of popular sovereignty, that is, possession of supreme power by the people. Possession of supreme power by the people. Democracy is of two types, direct and indirect. In direct doctrine, the people exercise their supreme power directly, as the case in the Switzerland. There are four devices of the referendum, initiative, recall, and plebiscite. Democracy has two types, indirect. डेमोक्रेसी दो तरह का है, जो डायरेक्ट और एक जो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मतलब सीधा और इनडायरेक्ट मतलब सीधा से नहीं घुमा के रखे हो उसको इनडायरेक्ट। और उसका अंदर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर डायरेक्टली इन देयर केस। डायरेक्ट में जो पीपल जो इंसान है वो अपना पावर को डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि स्विट्जरलैंड का एग्जांपल दिया है। एंड देयर आर फोर डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नेमली रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है, प्लेबिसाइट्स है। अगर मेरे को किसी को लीडर बनाना है तो मैं डायरेक्ट वोट देंगे, मेरे वोट का रिजल्ट जो वो लीडर बनेगा नहीं बनेगा वो डिसाइड कर। दिस इज द डायरेक्ट। एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी rests on the other hand, the representative elected by the people exercise the supreme power and thus carry the government and make the law. In indirect democracy, on the other hand, the representatives elected by the people exercise the supreme power. देखो, और इनडायरेक्ट मतलब ना, इनडायरेक्ट मतलब जिसको मैं वोट दे के लीडर बनाया उसने अपना पावर को यूज कर, सिंस वो लीडर है तो उसने अपना पावर को यूज करके, उसने अपना पावर को यूज करके सबके लिए एक रूल बनाया। और या तो अपना पावर को यूज करके सबके लिए कुछ कर दिया, ऐसा वो इनडायरेक्ट है। मतलब मैं जिसको वोट दिया उसने हमारे लिए कुछ कुछ काम किया तो वो इनडायरेक्ट होगा। पर अगर मेरे को उसको लीडर बनाना तो मैं सीधा उसको वोट दे के लीडर बनाएंगे। अगर मैं उसको लीडर नहीं बनाना चाहते तो मैं उसको वोट नहीं दे देंगे तो वो लीडर नहीं बन जाएंगे। तो वो है मेरा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना। और दूसरा है इनडायरेक्ट, दैट मीन्स मैं जिसको बनाया उसने अपना पावर का यूज़ करते हुए कुछ कुछ रूल्स और कुछ कुछ बिल्स ये सब पास करवाए, वो इनडायरेक्ट। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। वो लीडर जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल को, किसके लिए काम कर रहे हैं, पीपल के लिए। तो मैं ऐसा समझा, पता नहीं, इट्स ऑफ टू काइंड, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। और इसका भी दो टाइप है, एक जो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री democracy, under which the executive is representable to the legislature for all the policies and actions. Universal other punch. ये बहुत डिस्टर्ब है गाड़ी का आवाज़, जो मैं वापस से गेट बंद कर दे।
दिस मैं कहा था उसमें भी दो तरह का है बोला था ना. पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट है. The Indian Constitution provides for inter-representative parliamentary democracy under which the executive is responsible to the legislature for all its policies and actions. Universal other franchises, periodic elections, rule of law, independence of judiciary, and absence of discrimination on certain grounds are the manifestation of the democratic character of the Indian policy. The term democratic is used in the preamble in the broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy. This dimension was stressed by Dr. Ambedkar in this. इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है. In the same context, the Supreme Court observed in 1927 that the Constitution envisions to establish an egalitarian social order rendering to every citizen social, economic and political justice in social and economic democracy of the Bharat Republic. Republic का meaning क्या है? Democracy. Democratic policy can be classified into two categories: monarchy and republic. Democratic polity can be classified. Democratic polity can be classified into two categories: monarchy and republic. 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 In monarchy, the head of the state, usually king or queen. Monarchy मतलब जो एक स्टेट होगा उसका जो मेन लीडर होगा वो क्वीन होगा या तो किंग होगा. Enjoy the hereditary positions that is comes into official through succession. और ये इसमें जो ना हेरिडिटरी होगा. फॉर एग्जाम्पल मेरा पापा किंग है तो उसका कोई बेटा नहीं. ओनली मैं उसका बेटी है तो उसका पावर जो नेक्स्ट मेरे पापा मर जाने से मेरे पास आएगा और मैं नेक्स्ट क्वीन बनेगा वो स्टेट्स के लिए. ये हेरिडिटरी है. और दूसरा क्या बोल रहे हैं? That is, he comes into office through succession. President Britain. In a republic, on the other hand, the head of the state is always elected directly. और रिपब्लिक का जगह में जो हेड है उसको हम लोग इलेक्ट करेंगे कि ये लीडर बनेगा. जैसे कि हम लोग मोदी को इलेक्ट करते हैं कि वो हम लोग का लीडर होगा थ्रू वोट से. हेरिडिटरी फिक्स पीरियड. और वो जो फिक्स पीरियड है जैसे कि मोदी 5 साल के लिए आते हैं और उसके बाद री इलेक्ट होते हैं. अगर वो फिर से जीत गए तो फिर 5 साल के लिए बैठेंगे. और पर मोनार्की में सिर्फ किंग रूल करेंगे जब तक वो नहीं मर जाते. और अगर वो मर जाते हैं तो उसका नेक्स्ट उसका बेटा और या तो उसका बेटी आएंगे और वो रूल करेंगे जब तक वो नहीं मर जाते. उसका नेक्स्ट फिर उसका बेटा या बेटी को मिल जाएंगे ऐसा. पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होते. हम लोग अपना लीडर को हम लोग वोट देके फॉर द सम पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए हम लोग इलेक्ट करते हैं. ये द term justice in the preamble embraces three distinct forms: social, economic and political, secure through plebiscites, means opinion of people on any issue. Social justice denotes the equal treatment of all citizens without any social
distinction based on caste, color, race, religion, sex, and so on. Fraternity का मतलब नहीं चलता मैम. Fraternity means a sense of brotherhood. The Constitution promotes this feeling of fraternity by the system of single citizenship. Also, the fundamental duties, Article 51A, says that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional, and sectional diversity. The preamble declares that fraternity has to assure two things: the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. The word integrity has been added to the preamble by the 42nd Constitution Amendment. Integrity, 42nd Constitution Amendment Act. कितना ज़्यादा Constitution Amendment Act है. According to K.M. Munshi, a member of drafting committee of the Constitutional Assembly, the precious dignity of the individual signifies that the Constitution not only ensures maternal fraternity. मैं बताइए fraternity मतलब ना brotherhood है. मैं इंडिया में है और क्या बोल देंगे, और मैं इंडिया का और सब इंडिया, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल द, मैं प्लेज भी भूल गया. हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रमोट करते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप, ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटीज, हम लोग ब्रदरहुड है. और नहीं पढ़ने में उनको
territory and state. Is emolument, is affirmation and oaths, as Rajya Sabha seats allocation, and as scheduled tribes and scheduled areas control and administration. Also other tribal areas in Tripura, Assam, Mizoram and Meghalaya. FA Federalist Union State and concurrent list. Also official language. ELSA land reform, OLD old PMP. ELSA land reform and DSA defection anti-defection law 52nd amendment and PSA Panchayat right power response ability 73rd amendment. MC municipalities right to respond. पहले कितने स्टेट्स था? 14 states and 6 union territories: Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Bombay. Bombay was state before 1956. Bombay was a state. And Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, and West Bengal. All the northeast come and the Assam in 1956. Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Bombay, Jammu Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Mysore, Odisha, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal. 14. Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Bombay, Madhya Pradesh, Mysore, और MC one more was Madras, Kerala, and Odisha, Punjab, Jammu Kashmir, Rajasthan, Uttar Pradesh, and West Bengal. And Union Territory was Andaman and Nicobar, Delhi, Himachal Pradesh, Lakshadweep, Mini-Koni, and Amindivi Island. Lakshadweep, Mini-Koni के Manipur, Tripura. Manipur and Tripura was the union territories. Okay. States was Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Bombay, Kerala, Jammu Kashmir, Madhya Pradesh, Mysore, Madras, Odisha, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, and West Bengal. Citizenship नहीं पढ़ा मैं. By birth, by registration, by naturalization, loss of citizenship, by renunciation, by termination, single citizenship.
5 मिनट का फिर ब्रेक ले लेंगे क्या? इधर है, मैं बोलूँगी अरे वॉशरूम। I'm a true Indian.
पैसे तक जाते हैं। अभी फिर चले स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर enshrined in Part 3 as the Constitution from the Article 12 to 35. In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA. Bill of Rights. Part 3 of the Constitution is slightly described as the Magna Carta of India. Magna Carta of India. It contains a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights. In fact, the fundamental rights in our Constitution are more elaborate than those found in the Constitution of any other country in the world, including the USA. Okay. The fundamental rights are guaranteed by the Constitution to all persons without any discrimination. They uphold the equality of all individuals and dignity of the individual, the large public interest and unity of the nation. देखते कैसे है? 9 बजे 10 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Excuse me. The fundamental rights are granted by the Constitution to all persons without any discrimination. They uphold the equality of all individuals and dignity of the individual, the large public interest and unity of the nation. The fundamental rights are meant for promoting the ideal of political democracy. They prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country and protect the liberties and freedom of the people against invasion by the state. They operate as limitation on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. In short, they aim at stabilizing a government of laws and not of men. The fundamental rights are named so because they are guaranteed and protected by the Constitution, which is the fundamental law of land. They are fundamental right also the sense that they are most essential for all-round development, material, intellectual, moral, and spiritual in individuals. The origin of the Constitution provides seven fundamental rights: right to equality, right to freedom, right to against exploitation, right to four number is right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to property, right to constitutional remedies. 7. Right to constitutional remedies. Right to equality, right to freedom, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right to cultural and educational right to cultural and educational right to cultural and educational right to property,
right to constitutional remedies. हैं? I omit one line because see, I count only 6. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right to freedom of religion, right cultural and educational rights, and right to property, right to constitutional remedies. There are 7 fundamental rights. 7 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right to religion, cultural and educational rights. 6 is right to property and right to constitutional remedies. Yay! However, the right to property was deleted. However, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44 Amendment Act of 1978. Okay, right to property was deleted from the list of fundamental rights. There was 7 fundamental rights. Okay. There are 7 fundamental rights. From among 7, one fundamental right is deleted, that is right to property in the Amendment Act of 44 Amendment Act under 44 Amendment Act of 1978, 1978. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, rights freedom of religion, rights culture and education, right to property is deleted from the 41st Constitutional Amendment Act in 1978. Yes, it made legal right under Article. It is made a legal right under Article 300A. और इसको लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A. 300A in part 12, 10, 11, 12 of the Constitution. So at present there are only 6 fundamental rights. So now there are 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religion, cultural and educational rights, and last is right to constitutional remedies. This 6th right is features of fundamental rights. features of fundamental rights. Features of fundamental rights. ये बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें इतना सारा आर्टिकल है. इतना ज़्यादा है. इसका फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स का? Fundamental rights granted by the Constitution are characterized by the following. Some of them are available only to the citizen, while others are available all the person, whether citizen, foreigner, or legal persons like corporation or companies. कुछ सिर्फ सिटीजन के लिए और कुछ सब के लिए, इवन फॉरेनर्स के लिए है, फैक्ट्रीज लोग के लिए है, बिजनेस कंपनीज, ये सब लोग के लिए. दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. फंडामेंटल फीचर्स जो क्या है वो जो एब्सोल्यूट नहीं है पर क्वालिफाइड है. मतलब देखो, हम किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं बोल सकते.
मैं बिना रीज़न का मैं किसी के बारे में खराब नहीं बोल सकती, मैं उसको कुछ भी नहीं बोल सकती। मेरे पास इतना ज़्यादा राइट्स नहीं है कि मैं किसी का घर में जाके मैं तोड़-फोड़ करके आ जाएगा। मेरे को एब्सोल्यूट पावर नहीं है। जो मैं मेरा मन करेगा मैं वो सब नहीं कर सकते। कुछ कुछ जगह में मेरे को एब्सोल्यूट मतलब अगर मेरे को पढ़ने का मन है तो मैं पढ़ सकते हैं, मेरे को खाने का मन है तो खा सकते हैं, पर मेरे पास इतना राइट नहीं कि मेरे को खाने का मन है तो मैं बिना पैसे दे के मैं दुकान से कुछ भी लेके खा लेगा, ऐसा मेरे पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्या ये एग्जांपल करेक्ट है क्या? लगता तो नहीं है। हो जाए कोई नहीं, पर सीधा सीधा ये मतलब है कि यू डोंट हैव एब्सोल्यूट राइट बट क्वालिफाइड, मतलब कुछ कुछ राइट है। मेरे को पढ़ने का मन है तो मैं पढ़ लेगा, मेरे को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं मेरे पास है। The state can impose reasonable restriction on them. However, whether such restrictions are reasonable or not is be decided by the courts. है ना? Thus, they strike a balance between the rights of the individual and those of the society as a whole, between individual liberty and social control. All of them are available against the arbitrary actions of the state. However, some of them are also available against the action of the private individuals. बहुत बढ़िया लगता है। देखो, हम लोग के पास एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट जो हम लोग के ऊपर में कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन जो रिजनेबल है और नहीं है डिसाइड करेगा कोर्ट। All of them are available against the arbitrary actions of the state. इसको भी लिखेंगे क्योंकि मेरे को जानना है सब चीज़। all of all, all of them are available against the arbitrary action of the state. However, some of them are also available against the action of private individual. Some of them are negative in character, that is, place limitations of the authority of the state, while others are positive in nature, conferring certain privileges on the persons. They are justiciable, allowing persons to move the courts for their enforcement if and when they are violated. They are defended and guaranteed by the Supreme Court, hence the aggrieved person can directly go to the Supreme Court not necessary by all appeal against the judgment of the High Courts. They are not sacrosanct or
They are not sacrosanct or permanent. Their parliament can crucial or repeal them, but only by a constitutional amendment act and not by an ordinary act. However, this can be done without affecting the basic structure of constitution. Mm, the amenability of fundamental rights is explained in detail in chapter 11. Okay. They can be suspended during the operation of the national emergency except the rights guaranteed by Article 20 and 21. Further, the six rights guaranteed by Article 19 can be suspended only when emergency is declared on the grounds of war or external aggression, external emergency, and not on the ground of armed rebellion, that is internal emergency. The suspension of fundamental rights during a national emergency is explained in detail in chapter 16. The scope of operation is limited by Article 31A, saving of law providing for acquisition of state. Article 31B. The application of the member of the armed force
permanent laws enacted by the parliament or the state legislature. The term law in Article 13 has been given a wide connotation as to include the following: permanent laws enacted by the parliament or the state legislature. Okay. The temporary laws like ordinance issued by the president or the state governors. Temporary laws like ordinance issued by the president or the state. अब लोग ऐसा होते क्या, पढ़ने के समय में भूख भी लगेंगे, सब बाकी काम भी याद आएंगे, जोक्स भी याद आएंगे, और तभी ये माथा दर्द करेंगे, और तभी आपको वॉशरूम भी जाना होगा, तभी आपको जिस फैमिली को कॉल्स करना है वो सब याद आएंगे, और बाकी सब चीज़ याद आएंगे एक्सेप्ट पढ़ाई. Temporary laws like ordinance issued by the presidents or the state governors. Temporary laws like ordinance issued by the president or the state government.
equality before law. Article 4. Protection of equality before law. Equality before equality before equal protection of equality before equal protection of equal equal before equality before equal protection ഏതിനാണ് the state shall not deny to any equality before आर्टिकल 14 जो बोलते हैं सब इक्वालिटी ऑफ लॉ होना और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए विद इन द स्टेट्स इसमें क्या लिखे Article 14 says that the state shall not deny to any person's equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. This provision confers rights on all persons, whether citizen or foreigners. स्टेट जो इंजॉय करेगा इम्यूनिटी प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट जो नहीं इन लोगों जो ऐसा नहीं करेगा कोर्ट को अगर वो लोग अपना पावर से कोई चीज़ पे any court during his term of office in any court during कोई भी आर्टिकल कोई भी आर्टिकल लॉ उसमें ना प्रोटेक्शन ना nothing his term of office is nothing his term of office इसीलिए उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट को no civil proceedings against the president of any act done by him in his personal capacity whether before or after to any civil or criminal proceeding of either house or a Article 31C is an exception to Article 14. It provides that the laws made by the state for implementing 14. It provides that the laws made by the state for implementing the directive. Article 39 cannot be challenged on the ground that the laws made by the state for implementing the directive principles ambassadors and diplomats.
discrimination certain grounds. Article 15 certain grounds. Article 15 provides that the state shall race, caste, or whether specify religion, race, caste, sex, and place of birth. Religion, race, caste, religion, race, on certain provision of discrimination on certain grounds. On certain provision of discrimination on certain grounds. Article 15. Article 15 prohibition of discrimination on certain grounds. Article 15 prohibition of Article 15 prohibition of discrimination on certain prohibition of discrimination of certain grounds. Prohibition of discrimination on certain grounds. Prohibition of discrimination on certain grounds, that is prohibition of discrimination on certain grounds. Prohibition of discrimination on certain grounds. Religion, place of certain grounds. 5 ground which religion, place of certain grounds. 5 ground which the Article 14 provides. In this provisions are discrimination, and only the word discriminations means to make an adverse distinctions with regards to or to distinguish unfavorably from others. The use of the word only cannot the discrimination or be subjected to any disability, liability, restriction or condition on grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birthing, guards, road and places of public resort maintained wholly or partly by in local bodies, or provision of free educational tribes, for example, reservation of seats or free for the scheduled minority educational institution. For the scheduled minority educational institution. I'm tired. It's time to take the break. I'm tired. It's time to take the break. और सुबह से लाइट नहीं है और मेरा मोबाइल सिर्फ 17% है, बढ़ने वाला है। चल जाएगा मेरा मोबाइल, आर्टिकल ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15। Article 14 with equality before law and equal opportunity of equal protection of law. अब एक पर आ गई बोलती आर्टिकल 14 पर आर्टिकल 14 जो ना उसको नई अरेस्ट यूज करते तो उसको वो कोई आंसर नहीं देना होगा कोर्ट में। उसने क्यों यूज किया ऐसा? सर्टेन ग्राउंड कौन सा? उसने क्यों यूज किया ऐसा? सर्टेन ग्राउंड कौन सा? सेक्स है। नंबर क्या था? सेक्स है। नंबर क्या था? सेक्स है, कास्ट है, जिसमें ये 5 है, जिससे
कौन सा में एजुकेशनल और इंस्टीट्यूट लो में एजुकेशनल जैसे कि इंस्टीट्यूट लो में एजुकेशनल जैसे कि 100 सीट्स है 100 में भी सीट्स है amendment in other words in order to give effect to this provision the since 2006 providing a quota देखो ये क्या बोल रही है Act 2006 provide a quota of 27 verification और ये लोग में भी 27% OBC के कोटा है कि वो उधर में जाए और पढ़ाई करे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी कोटा है इन अप्रैल 2008 सुप्रीम कोर्ट upheld directed the central to exclude the preliminary advance section among डायरेक्ट वो लोग को 27% कोटा है कोई भी इंस्टीट्यूट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए पर कोई क्रीमी से नीचे है ऐसा कुछ कैटेगरीज है फर्स्ट कैटेगरीज जो बहुत अमीर है पर भी ओबीसी में आते हैं और सेकेंड जो ओबीसी में आते हैं पर वो गरीब है को जो क्रीमी लेयर में पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड एसपो काउंट किया जाएगा जो वाइस प्रेसिडेंट होगा जजेस होगा एससी और एचसीएस चेयरमैन लोग मेंबर्स ऑफ यूए क्लास 1 एंड ग्रुप बी इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ये लोग को भी नहीं मिल जाएगा प्रोफेशनल लाइक द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल बिलोंग टू क्रिमिनल अमंग thus will not get the quota benefit ये लोग को नहीं मिल जाएगा बेनिफिट ये लोग को नहीं मिल जाएगा उस इंसान अगर मेरे को कुछ हेल्प करना है तो मैं उस इंसान को अगर मेरे को कुछ हेल्प करना है तो मैं उस इंसान को हेल्प करना है जिसको नीड है तो पर्सन हैविंग ग्रोथ द exemptions limit in 1970 such limit in 1970 subsidy ठीक है EWS in education is added in the 103 Amendment Act of 103 Amendment Act of 19 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 103 Amendment Act 19 103 Amendment Act of 19 103 Amendment Act of 2019 में weaker sections Education is the above exceptions D was added by the 103 Amendment Act Central 3 Amendment Act Central thing 10% reservation to the benefit of this reservation can be available by the persons belonging to EWS economically weaker sections who eligibility criteria below 8 lakhs are to be identified as economic weaker section for the benefit of several. Look, 23. Salary, agriculture, business, professional, utility income for the financial year of application. Persons whose family owns or profession any of the following
residential plot of 100 residential plot of 200 square yard and above the areas or other than the notified municipalities. Property health would include the person who seeks benefit of reservation, his or her parents and siblings. Equality of opportunity in public employment. Equality of opportunity in public employment in Article 16. 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 Provides for equality of opportunity for all citizens in matters of employment or appointment. Citizens, no citizen less against or be ineligible for any employment or official under the state program. Equal of opportunity office under the state. No citizen can of opportunity office under the state. No citizen can be discriminated. कोई भी citizen को discriminate नहीं करना against to conduct race, caste, sex, descent and birthplace. Religion, race and birthplace. Religion, race, caste, sex, descent and religion. Religion, caste, sex, caste, race, place of birth. Place of birth. Articles. Oh yes, yes. Doctoras. Thank God बैटरी सिर्फ 9% बचा था अभी लाइट आ गया. Equality of opportunity in public employment is Article 16. Article 15 caste, race, gender, religion or race. The state can provide for reservation of appointment or post in favor religion or the legal section of citizens. This reservation of for this purpose, economically weaker sections would be notified by the state from time to time. Second backward classes commission under the second backward classes commission under the chairmanship of B.P. Mandal, a member of parliament in terms of Article 340 of the backward classes. Introduced two changes.
preference to the poorest section among the OBCs in the 27% quota, creation of another 10% of jobs for other backward sections who are closet for, which projected that additional reservation of the OBCs with certain conditions, which is the motion in some extraordinary situations. This in some extraordinary situations. This rule should be applied every year. This rule should be applied every year. This should be applied every year. Violate 50% rule. A permanent statutory over-inclusion and under-inclusion in the list of OBC. Establishment of an authoritarian and legislating Sword Doctrine. Sons of Sword Doctrine. Reservation of upon particular religion or domination. Reservation of chairmanship of Kaka Kalelkar. Chairman of Kaka Kalelkar. Chairmanship of Kaka Kalelkar. Chairmanship of Kaka Classes Commission checking backward classes. Investigate the condition of the socially and economically backward classes and suggest measures. Second, backward. The Commission recommended for reservation of 27% government job in the reservation of 27% government job in the OBC, 27% in Narsimara, PV Narsimara, another 10% PV Narsimara, another 10%. PV Narsimara suggested the poorest for 27% reservation quota or another 10% jobs for the poorer. Okay? Another 10% poor job economically backward sections of the higher caste. One thing, not fundamental rights. The judgment was based in a batch of appeals per take. There is no fundamental rights to reservation. 16 closet 4 and 16 closet 4A are rational mandamus can be issued by the court directing state governments to provide reservation. Should be excluded from the list of beneficiaries of reservation. No reservation and promotions. Reservations should be confirmed. Backlog vacancies is what established to examine complaints of the Nanda Committee. Ramnanda Committee was appointed to identify the creamy layer among the OBCs. It submitted its report in 1997, which was accepted. National Commissions was for backward classes was established in 1993 by an act of parliament. The mandate was to examine this for the purpose of job commissions and also enlarge its functions. For this purpose, the amendment with regard to reservation and promotion, it
provision in Article 16 that empowers the state to consider the unfilled reserve vacancies of present reservation of total number of vacancies of the year. In brief, it ends the 50% ceiling on reservation in backlog vacancies. The 36th Amendment Act of 1994 has placed the Tamil Nadu Reservation Act of 10% reservation to the economically post and services in the schemes of reservation. This regard has already been explained under Article 15. Further, the scientific and technical post which satisfy all the following conditions can be exempted. Thank you so much. जब तक गए हैं अभी में अभी टाइम हो गया है इसको रखने का. बाय बाय.